Hello children, good morning. How are you all? Fine. Okay, so today we are going to study subject GK of class 3. Okay, so up till chapter number 6 we have completed. Yes, it was mighty dinosaurs. Okay, now we are moving further with our chapter number 7, that is plants. Okay children, we like to plant plants, right? So plants gives us many things. Okay, they gives us oxygen, fruits and many different things. Okay, so they are very helpful to us. So today we are going to study some different kind of plants. So let's start. Plants are one of the biggest gift of nature. This gift is given to us by nature, so we must use it very carefully. Okay, so plants are the best gift of nature, right? They make the world look beautiful, green and fresh. Yes, we like plants. If there is many more plants, we feel fresh, right? They gives us fresh air. Okay, so we like to go on places where there is more greenery, right? So likewise the world look beautiful by plants. Yes, you like to go in a garden. Okay, so why? Because there is more greenery, there are different kind of flowers and you like to see there, right? So they give us oxygen, fruits and many more useful things. Yes, plants gives us many more useful things. So there are many kind of plants. So there are mainly 4 type of plants, that is herbs, weeds, creepers and a shrub. Okay, so there are 4 kind of plants. Plants are divided into 4 categories, that is herbs, weeds, creepers and shrubs. Okay, so there are many kind of plants, from weeds to shrub, from cactus to ferns, from grass to trees. Yes, there are many kind of plants, different kind of plants, also different kind of trees are there, from weeds to shrub. Okay, what is called as a weed? Weeds are uncultivated, unwanted plants. Okay, and shrubs are medicinal plants, they gives us medicine, right? Cactus, okay, to ferns, and from grass to trees. Clear? Now kinds of plants, I already told you that there are 4 kinds of plants: herbs, creepers, weeds and a shrub. Okay, so here first of all we are going to learn about herbs. Okay, so most medicinal plants are known as herbs. Okay, medicinal plants are called as a herbs. Then weeds. Weeds are wild plants that grow where they are not wanted and harm the cultivated plants. So medicinal plants we called as a herbs, and uncultivated, unwanted plant that we don't want and they grown up like cactus, so that are called weeds, which are not useful to us. Okay, then it is plants which climb or grow with the support of another plant or a wall are called creepers. Creepers means वो plant जो well वाले होते हैं, right? जिनकी well होती है. So that is plants, उनको हमें सपोर्ट देना पड़ता है तो ही वो ग्रो करते हैं. अगर उनको हम ऐसे ही प्लांट करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे. So that are creepers. Yes. So creepers वो प्लांट होते हैं जिनको हमें या वॉल का सपोर्ट देना होता है या अनदर प्लांट का सपोर्ट अगर हम देते हैं तो होते हैं वो क्रीपर्स. ओके, उनको किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है जिसके बेस पे वो ग्रो करे. So that are called as a creepers. The next is about a shrub. Shrub is a short plant with a woody stem. It is shorter than a tree. It has a woody stem. उसका जो स्टेम होता है वो वुड होता है. ओके, हमें पता है कि प्लांट का स्टेम जो होता है वो बहुत पतला होता है, पर इसका जो स्टेम होता है वो बहुत थिक होता है. So it has a woody stem and it is shorter than a tree. Tree से वो बहुत ही short होता है. So that are called as a shrub. Clear up till here children? You like the chapter? Okay, so now we are going to learn definitions of all this. Herbs, weeds, then another was, third one was creepers and fourth one was a shrub. Okay, so let's start with our definition. First one is herbs. तो herbs हम किसको बोलेंगे? जो हमको
जो प्लांट्स हमें मेडिसिन देते हैं, यस, उनको हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं. सो दैट इज हर्ब्स. सो मेडिसिनल प्लांट्स which gives us medicine are called herbs. herbs का मतलब होता है मेडिसिनल प्लांट. देन है weeds. weeds मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनग्रोन प्लांट्स, जिन्हें हमें बोया नहीं है और वो फिर भी उग जाते हैं. दैट इज कॉल्ड आर वीड्स, जो हमें अनवांटेड होते हैं. सो वीड्स आर, और वो कैसे प्लांट्स होते हैं? वाइल्ड प्लांट्स. वो हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं. यस, उनके लीव्स हम नहीं तोड़ सकते हैं, उनके फ्लावर्स को हम कहीं यूज नहीं कर सकते हैं. यस, सो देयर आर वाइल्ड प्लांट्स व्हिच आर नॉट हेल्पफुल टू अस. सो दैट आर कॉल्ड एज अ वीड्स. So, the wild plants that grow where they are not wanted grow where they are not wanted harm the cultivated plants. और इस प्लांट के पास में अगर हम दूसरा कोई यूजफुल प्लांट ग्रो करते हैं तो वो उसको भी हार्म कर देता है और वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है. सो हमें ये प्लांट्स जब हो जहाँ पे, वहाँ पे हमें हमारे कल्टीवेटेड प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देते, इसलिए हमें वहाँ पे प्लांट नहीं करना चाहिए. So they are not wanted and harm the cultivated plants. Are called as weeds. Okay. समझ में आया? Then next है creepers. So creepers क्या होते हैं? जो प्लांट वॉल के या किसी और प्लांट के सपोर्ट से ग्रो होते हैं. दैट आर कॉल्ड एज अ क्रीपर्स. सो प्लांट्स which climb or grow with the support of हमें इस प्लांट्स को जो है सपोर्ट देना पड़ता है. तो विद द सपोर्ट ऑफ एनी अदर प्लांट और वॉल आर कॉल्ड क्रीपर्स. राइट, आर कॉल्ड एज अ क्रीपर्स, जो किसी और प्लांट के या वॉल के सपोर्ट से ग्रो हो पाते हैं. अगर उन्हें सपोर्ट ना मिले तो वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. आर कॉल्ड क्रीपर्स. एंड श्रब मैंने बताया ना, जो जिसका वुडी स्टेम होता है और जो शॉर्ट होता है ट्री से. सो अ शॉर्ट प्लांट which has a woody stem are called shrubs. Yes, again we will revise. See here, herbs किसको बोलते हैं? Medicinal plant को. So medicinal plant which gives us medicine are called as herbs. Then it is weeds. Weeds मतलब होते हैं wild plants जो हमारे लिए unsafe होते हैं, which we don't want, are called weeds and which harm the other plants. So the wild plants that grow where they are not wanted
प्लांट को वॉल की या अनदर प्लांट की जरूरत है, ट्री की जरूरत है ग्रो होने के लिए, उसको हम क्रीपर्स बोलेंगे. So plants which climb or grow with the support of any another plant or a wall are called as a creepers. Then it is about shrub. Shrub वो plant होता है, short plant होता है जिसका stem जो है वो woody होता है और वो tree से short होता है. So a short plant which has a woody stem are called as a shrub. Okay children, so you have to write all these things. So we will meet in the next lecture.